A very good evening and welcome everyone. I, Dr. 𝗖𝗟𝗘𝗔𝗥𝗜𝗡𝗚 on behalf of Voice of Healthcare, welcomes all the speakers and the viewers who have joined in for today's discussion. Voice of Healthcare, along with our supporting partners, Lung Cancer Foundation, Lung Connect, and 𝗀𝗟𝗃, has taken an initiative to bring together the experts and speakers for today's session on building lung cancer advocacy in India, which aims to understand the needs of the patient and how we can further strengthen this space to increase lung cancer advocacy in India. Along with this, we shall also be honoring the voice of our heroes, that is, our lung cancer survivors, who shall talk about their journey in the battle against lung cancer. I would now like to commence this session by introducing our eminent speakers. So, for today's discussion, we have Mr. Vivek Tomar, patient advocate, lung cancer, clinical trials, cancer research, and access to latest treatment, Rise to Survive Cancer. Dr. Anand Sachithanandan, President and co-founder, Lung Cancer Network Malaysia, and consultant cardiothoracic surgeon. Welcome, Dr. Anand. Thank you. Dr. Kumar Prabhash, Professor, Medical Oncology, Tata Memorial Hospital, Mumbai. He will join us in a bit. Dr. Narayanankutty, Warrier, Medical Director, MVR Cancer Center and Research Institute. Welcome, Dr. Narayan. Mr. Ravi Prakash, Representative, Lung Connect and Lung Cancer Survivor. Welcome, Hello. Mr. Prakash. Ms. Vandana Mahajan, Palliative Care Counselor and Cancer Coach. Along with sharing her views, Ms. Mahajan will also be moderating today's session. Welcome, Ms. Mahajan. Thank you so much, Dr. Ritika. Happy to be here. We also have two patient voices with us today who will share their experience with us, Mr. Debdulal Chakrabarti and Mr. Premchand Gupta. So we'll start with the stories of our heroes now. Mr. Debdulal, आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को अपनी स्टोरी और एक्सपीरियंसेस बताइए. मैं सबसे पहले सैल्यूट करता हूं टाटा की उस टीम को जिनके अथक प्रयास के बाद मैं आज 5 साल होने को मुझे आए. फरवरी में 5 साल हो जाएंगे इस कैंसर को डायग्नोसिस हुए. टाटा के डिसिप्लिन में और मेरा ट्रीटमेंट में बहुत उतार चढ़ाव आए. सबसे पहले मेरा फोर्टेज में ऑपरेशन हुआ ब्रेन ट्यूमर का. उसके बाद 2 तारीख को मेरा ऑपरेशन था सन 18 में. उसके बाद मैं 16 तारीख को से बॉम्बे पहुंच गया टाटा हॉस्पिटल. वहाँ मेरे सभी रूटीन टेस्ट सीटी एमआरआई पेट स्कैन सभी हुए. और उसके बाद मेरा ईजी जो टेस्ट था एक पॉजिटिव टेस्ट आया मेरा जो जिसमें वो टैबलेट जेप्ट्रिन वगैरह मुझे सजेस्ट की गई. EGFR पॉजिटिव था. उसके बाद मुझे कार्बोप्लेटेड 4 चैनल दिए गए और उसके साथ एक टैबलेट मेरी चल रही थी और पैम चल रहा था. उसके बाद मार्च में मुझको इसके साइड इफेक्ट बहुत होने लगे. तभी मेरी 10 रेडिएशन ब्रेन को दिया गया. ब्रेन में मेरे ट्यूमर था कैंसर का और लंग्स में मेरे कई छोटी छोटी गांठ थी, मेटालिस्टिक थे और सिर में भी था. और उस समय मुझे
डेक्सा स्टेरॉइड दिया गया, जिसके कारण मेरा वेट जो है 80-82 किलो से 102 किलो तक हो गया। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, पैरों में सूजन आ गई। तो मैंने रिक्वेस्ट किया और डॉक्टर ने भी मुझे सजेस्ट किया, अगर आप टेपर में से कम कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा है। तो डॉक्टर के सुझाव के अनुसार मैंने उसको धीरे धीरे करके बिल्कुल बंद कर दिया, लेना बंद कर दिया और हाँ, उसे लेना बंद कर दिया। और उसके बाद मेरा वजन फिर 80 किलो हो गया। आज मैं बहुत अच्छा हूँ। आज जिसमें मेरी फैमिली का सपोर्ट, एक घर में एक मंदिर जैसा है। घर के प्रत्येक सदस्य का मेरे जीवन में बहुत सहयोग है। और टाटा का प्रत्येक कर्मचारी जितना ईमानदारी और टीम वर्क के साथ जो काम होता है और जो सिस्टमेटिक होता है, मैं शायद इसीलिए जिंदा हूँ। मेरे परिवार, मेरे जीवन में अब मैं हेल्दी हूँ, बहुत हेल्दी हूँ। पर मुझे ये लगता है कि 3 लोगों का जीवन में बहुत योगदान रहा है मेरे लिए। एक टाटा, सबसे ज्यादा टाटा का, जिनको मैंने फॉलो किया, जो डॉक्टर की बात को फॉलो करेगा। और एक लोग सोच लेते हैं कैंसर हो गया तो अब तो मृत्यु आ गई, कुछ नहीं है। मोरल हाई रहना चाहिए, मोरल जो है हाई रहना चाहिए। मृत्यु तो कैसे भी हो जाती है, डायबिटीज की दवा खाते हैं और बीमारी की दवा खाते हैं, कभी एक्सीडेंट से मर जाता है, कोई माँ के पेट में मर जाता है। इसलिए कभी डरना नहीं चाहिए इन चीजों से। एक तो स्ट्रॉन्ग मोरल होना चाहिए, दूसरा अच्छा खाना चाहिए, हाई प्रोटीन, मिनरल, सब चीज। मैं सब बढ़िया खाना खाता हूँ, जो अच्छे खाने हैं। कोई प्रिजर्वेटिव नहीं लेता, कोई जंक फूड नहीं लेता, कोई पिज्जा बर्गर नहीं मेरे घर में आता। मैं बढ़िया शुद्ध खाना खाता हूँ, अच्छी डाइट लेता हूँ। अच्छा खाना और उसे पचाना। मैं 14,000 कदम तक रात तक चलता हूँ, सुबह से लेके योग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ और मैं बहुत मस्त रहता हूँ। तीसरा व्यक्ति मेरे जीवन में एक डॉक्टर डीबी शर्मा, मेरे फैमिली फ्रेंड है। उनका सहयोग मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए बहुत भी जबरदस्त रहा। ये मेरी और यात्राएं। अब मुझे थोड़ी छोटी परेशानी बीच में आती है, जैसे कीमो लगने के बाद मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मोशन नहीं होता कई दिन आराम से। एक मुझे कफ का दिक्कत है, जो फंस जाता है, मुश्किल से निकलता है। 2 परेशानी है। इसके अलावा मैं खूब चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, पचा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, चल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सैल्यूट करता हूँ टाटा की उस टीम को और परमात्मा से कामना करता हूँ ये लोग इनको इतनी लंबी आयु और इतना सुख दे कि ये ऐसे लाखों लोगों को मेरी तरह ठीक कर दें। मैं अपने आप को स्वस्थ मानता हूँ, मैं बीमार नहीं मानता जी। तो मैं आज अपने आप को ठीक समझता हूँ। धन्यवाद मिस्टर प्रेमचंद गुप्ता। आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत ही इंस्पायर किया, आपने एक नई आस दी है उनको अपनी इस स्टोरी और जर्नी से। अभी मैं मिस्टर देवदुलाल चक्रवर्ती को कहना चाहूंगी कि आप आइए सामने एंड आप अपनी स्टोरी बताइए सबको। आपका सर माइक जो है वो म्यूट है। I think we have lost Mr. Debdulal due to some internet issues. Okay. Yes, he's back. हेलो हेलो। हाँ जी मिस्टर देवदुलाल, हम सुन सकते हैं आपको। आपका म्यूट हो गया माइक, अनम्यूट करिए। हाँ जी ठीक है, मेरा जा रहा है मैडम, मेरा आवाज आपका पास आ रहा है? आ रहे सर। नमस्ते, मैं देवदुलाल चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल का। मैं ही हेड ऑफ द फैमिली। मेरा 4 फैमिली मेंबर, वाइफ, डॉटर एंड एक लड़का है। मेरा सब छोटा छोटा है, लेकिन मैं बहुत पुअर आदमी हूँ। 2018 साल में ये मेरा प्रॉब्लम आया। मैंने कभी वो स्मोकिंग ड्रिंकिंग ऐसे कभी नहीं करता, लेकिन क्यों आया मेरा मालूम नहीं क्या हो गया। 2018 अक्टूबर से मेरा जो सिम्टम फर्स्ट आ गया वो
बहुत कंटिन्यू काशी हो रहा है मैडम, और फीवर इन इवनिंग, संध्या दिखे शाम तक मेरा फीवर आ रहा है। वेट लॉस हो गया 3 किलो। अच्छा, उल्टी, राइट लेग जो फीमार है वो बहुत दर्द था, हेडेक, राइट आई डिप्लोपिया, डबल विजन जो होता है वो होता है, खाना का मन नहीं लगता, लेकिन बहुत खाना बहुत भूखा रहता है, और वीकनेस, ये मेरा सिम्टम है। तो जो मेरा फर्स्ट डायग्नोसिस हुआ मेरा जिला डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हॉस्पिटल बैंकुरा, वो 12 जनवरी 2019 ये जो डिटेक्ट हुआ मेरा कैंसर हुआ, और एफएनएसी का पर मेरा रिपोर्ट है जो मेरा कैंसर हुआ राइट लंग्स में। वो मैं 12 जनवरी जब मेरा डिटेक्ट हुआ, वो 15 जनवरी में चला जाऊंगा टीएमएच चला गया था। वही मेरा जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, यही वेस्ट बंगाल में कुछ नहीं, मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया। और ट्यूमर मार्कर जो रिपोर्ट 19 जनवरी 19 पेट सिटी हुआ, एमआरआई ब्रेन का हुआ, बायोप्सी हुआ, रेडिएशन हुआ, एएल के टेस्ट हुआ, वो केमो भी 5 केमो मेरा चला था। और जो क्रिजोटिनिब कैप्सूल 250 बीडी वो स्टार्ट हुआ 16 जून 2019। और जो ऐसा होने के बाद ये वो क्या हुआ, जून से मैं एकदम फाइन हो गया, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवं इवन टुडे मैं तो अभी घर में आया, एक हाई स्कूल का अकाउंटेंट का काम करता हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ऐसा लगता है जो कभी मेरा बीमारी हुआ ही नहीं। ये मैं सैल्यूट करता है सभी को, डॉक्टर कुमार, प्रभाष, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, आप सभी को वंदना महाराज, और जो संजीव शर्मा मैडम, आप जो है, वो जो मेरा प्रेमचंद दादा है ना, वो मेरा पेशेंट मेरा रही है। तो मेरा 4 साल तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आराम से बाइक चलाता हूँ, सब काम करता है, बहुत काम करता है, वो खाना पीना सब ठीक है। ऐसा सोचता है मेरा कोई बीमार नहीं हुआ। मेरा जो प्रॉब्लम है वो जो क्रिजोटिनिब 250 ये आना चाहिए, क्योंकि मेरे 31 जुलाई में वापस आया टीएमएच से। 31 अक्टूबर मेरा जाने का डेट था, लेकिन पहले ही मैंने बता दिया मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा बड़ा जो दीदी है वो मर चुका है, बहुत प्रॉब्लम है। मेरा घर में कोई नहीं है, सब छोटा छोटा लड़का लड़की और मेरा वाइफ, हाउस वाइफ। तो मैं तो फाइन हूँ मैडम, इसीलिए मैं बहुत सेलेक्ट करता, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ सभी का पास, आपका सभी का कृपा पर मेरा ये जिंदगी वापस आया। यही यार, कुछ आपका कोई जानकारी है तो मुझे पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगा। धन्यवाद देवदुलाल जी। नमस्ते मैडम। आपने हमारे लंग सर्वाइवर्स सर्वाइवर्स नई आशाएं जो लंग कैंसर के लिए। धन्यवाद। Thank you so much for sharing with us. It was an inspiring one. I hope our lung cancer career has given inspiration for our viewers. for our viewers. Now, I would like Miss Vandana Mahajan to lead this session for us today. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Ritika. It was very inspiring to hear Premji and Debdulal. And, they are the ones who inspire so many patients, who have been diagnosed with lung cancer. Because lung cancer is probably one of those cancers which is detected so late.
because there are no symptoms per se to lung cancer. So really inspired to hear them. So today I'm here to moderate a session on advocacy. Advocacy is something which is not really very well understood in India as of now. And I want to emphasize and talk and get expert opinions on how we can together build lung cancer advocacy. There is a huge role that lung cancer advocates and advocacy can play in the overall betterment of the patient, not only provide support, but connect them to various resources, which makes their journey not so difficult. I have this privilege of interacting with a lot of experts today. I am going to begin with Mr. Vivek Tomar. Mr. Vivek Tomar is somebody who, I mean, people in India know who Mr. Vivek Tomar is. He's one of the most well-known and the most passionate lung cancer advocates we have in our country. Vivek ji, my question to you is, lung cancer advocate क्या होता है? ज़्यादातर इंडिया में लोग यही नहीं जानते कि लंग कैंसर एडवोकेट का मतलब क्या होता है. तो आप थोड़ा बताएंगे हमें इसके बारे में. जी, नमस्ते सभी को. As you have rightly said, वंदना जी, कि there is a very thin line कि advocacy क्या है, patient support group क्या है. So how I understand it, how I living is it is कि patient advocacy, चाहे वो lung cancer की हो या किसी और कैंसर की, patient advocacy is आज एक journey from आज क्या है और क्या होना चाहिए. That's first definition. To help understand कि कैसे कैसे इम्पैक्ट होता है. दूसरा कि कोई चल नहीं पाता क्योंकि उसके पास खाना नहीं है. उसको तरीके दो हैं कि हम वो चल नहीं पा रहा है तो हम उसको, एंड आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल कि क्रच वो छड़ी दें कि वो चल पाए. दैट इज पेशेंट सपोर्ट. एंड हम एक सिस्टम क्रिएट करें कि वो भूखा ही ना रहे. दैट इज पेशेंट एडवोकेसी. दैट्स द डिफरेंस. एंड इसीलिए शायद ये इंडिया में कम है क्योंकि हम इंडियन पीपल और ऑल द ह्यूमंस ग्लोबली वी आर वेरी गुड पेशेंट सपोर्ट करने में. हम सिंपैथी एम्पैथी सब मतलब वी आर ह्यूमन बीइंग. दैट्स व्हाई इमोशंस. Patient advocacy is bit more than only the emotions. It is, as I said, it is how to achieve that, how to ensure कि वो चीज हो ही ना. And why this word of advocacy, and it always confuse. कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि आप क्या LLB हैं, एडवोकेट हैं, आप पेशेंट एडवोकेट बोलते हैं या पेशेंट एडवोकेसी करते हैं. तो मैं बोलता हूँ नहीं, पर रोल वही है. फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उस तरह का एडवोकेट हूँ जो अपना खुद घर का केस लड़ रहा है, इसलिए फीस नहीं ले रहा है, और वो उसकी हर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जहाँ का एक डिसीजन गवर्नमेंट को काम करने के लिए बाध्य कर सकता है. सो देखो एडवोकेसी इज कि आप सिस्टम में वो चेंज कैसे लाएं कि आप डिपेंडेंट फैक्टर्स पे ना रहें. एंड बहुत छोटा सा एग्जांपल है, जैसे एंड वी विल डिस्कस इट इन मोर इन डिटेल के लाइक अभी किसी ने क्रियोटिनिक की बात करी या तो आई वॉज एबल टू ब्रिंग एल कैंसर की जितनी भी दवाइयाँ वो एक भी नहीं थी इंडिया में जब मैंने काम करना शुरू किया था. और आज 8 की 8 दवाई इंडिया में है. कॉस्ट पहली दवाई की सेकंड जनरेशन की सेरिटिनिब की जब मैंने स्टार्ट किया तो 15 लाख पर मंथ की थी, अब वो 15,000 पर मंथ पे आ गई है. तो दिस इज एडवोकेसी की ठीक है, आप पैसों से सपोर्ट कर पा रहे हैं, आप फंडिंग कर रहे हैं, बट ऐसा सिस्टम क्रिएट करना गवर्नमेंट के साथ में, डॉक्टर्स के साथ में, हॉस्पिटल्स के साथ में, मीडिया के साथ में और पेशेंट्स के साथ में, इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप टू मेक दिस सिस्टम बेटर. थैंक यू विवेक जी, बहुत ही बढ़िया आपने हम सबको समझाया कि एडवोकेसी का क्या मतलब होता है. इससे बेटर लैंग्वेज में आई थिंक हमें कोई नहीं समझा सकता था. आई हैव द सेम क्वेश्चन फॉर यू डॉक्टर आनंद. यू आर बेस्ड इन मलेशिया and we are all globally striving to create a network of patient advocates and create support groups which act as which support patient advocacy. So what in your opinion is the meaning of a patient advocate, Dr. Anand? Thank you very much. I'm afraid I couldn't
follow some of the earlier discussions, not my native language, but I got the gist of it. And I think I agree with Mr. Vivek. My sort of perception is, patient advocate, it could be an individual, it could be an organization. Basically, it's a person or an organization that's going to articulate the concerns of a patient, represent their interests, patient and the caregivers. And really, it's about trying to help the patient. I mean, we're talking about lung cancer here, but even in general terms, the patient to better navigate the healthcare system. And specifically, if we're talking about lung cancer, to better navigate that whole cancer journey. As I think the previous speakers have alluded to, the treatment landscape for lung cancer is become very complex, tremendous advances. And it's about, I think, bringing the patient on that journey, providing the necessary relevant support and information so that the patient and their families or caregivers can make informed choices, and be proactive in participating in that whole decision-making process. And I think, whether it's an individual or an institution, the requisite qualities, as has been mentioned, you need, good communication skills and a degree of empathy and, certainly a core knowledge to have an understanding of how the local healthcare system works, as well as the whole, in the context of lung cancer, the landscape, to have an overview. You don't need to be an expert, but I think it's just helping to help the patient and their families navigate better that whole journey. Thank you, Dr. Anand. So essentially what Dr. Anand and Mr. Vivek just shared is probably a patient advocate is somebody who acts as a bridge between the system and the patient, or maybe the treating team and the patient and the caregivers, or maybe the clinical trials that are happening and patients and caregivers don't have knowledge about it. So the patient advocate and the advocacy groups basically act as a bridge to connect the receiver to the giver, so as to say. Thank you, Vivek ji and Dr. Anand, for sharing your views. Vivek ji, मैं आपके पास वापस आना चाहती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी एज अ पेशेंट एडवोकेट कैसे शुरू हुई थी? I think unlike my fellow colleagues and friends who belong to the medical fraternity, who choose the profession of oncologist or radio oncology or surgery, I have not chosen it, honestly. And I think Ravi ji भी agree करेंगे कि हमने choose नहीं किया था. So my journey started with the diagnosis of my wife cancer, stage 4 lung cancer, never smoker, metastatic to brain, bones, ovaries, adnexia, मतलब आप सोचिए, मतलब you name the organ she had. और ये 2000 after multiple wrong diagnosis for 4 years, finally right diagnosis of lung cancer in 2012. So 2008 के आसपास से कभी रहा होगा. And when she started to have seizure, तो वहाँ से start हुई थी. और फिर because for all of us patient ये पता नहीं होता ना कि कैसे करना है, क्या करना है, तो obviously we started to follow. बट प्रॉब्लम ये थी कि 6 months के अंदर शी वाज इनटू कोमा, क्योंकि जितने भी इंडिया में ट्रीटमेंट थे उस टाइम पे, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, एवरीथिंग वाज ट्राइड, एंड कैंसर स्प्रेड इतना हो चुका था कि शी वेंट इनटू कोमा. और डॉक्टर ने कहा कि आप घर ले जाइए, सेवा कर सकते हैं तो कीजिए. मेरा घर में 3 साल का बेटा था, तो मैं घर कैसे लेके जाता? तो मैंने कहा नहीं, घर तो नहीं लेके जाऊंगा, फाइट करते हैं. एंड दैट थिंग हैज चेंज विवेक टू ए पेशेंट एडवोकेट कि कैसे बचाना है. और वो एक सेल्फिश स्टार्ट थी उस मेरी वाइफ को बचाने की, जिससे मैं इतना प्यार करता था हूँ. अगर वो होती तो इस हफ्ते 15 साल हो गए थे साथ में रहते हुए. तो देन आई केम टू नो दैट कि क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है यूएस में, एंड दैट वाज क्रिजोटिनिक at that time, जिसके बहुत अभी सब पेशेंट्स लेते हैं, एंड शी वाज डायग्नोस्ड विद एल्क पॉजिटिव. सो
उसके लाने का किया था। एंड एट द टाइम फॉर्चुनेटली वो कंडीशनल अप्रूवल यूएस में मिला था। वी गोट ए कॉस्ट ऑफ एज आई सेड 15 लाख पर मंथ, सब कुछ बिक गया। फिर वो इंडिया में आई एंड दैट्स हाउ स्टार्ट जर्नी। और मुझसे जब भी पेशेंट एडवोकेट ना बनता, बट देन क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ स्टेज 4 कैंसर में कुछ टाइम के बाद में प्रोग्रेशन आ जाता है रेजिस्टेंस की वजह से। और जब मैं नेक्स्ट मेडिसिन पे जाने लगा तो आंसर वाज कि नेक्स्ट मेडिसिन अगेन इंडिया पे नहीं है। उससे नेक्स्ट टाइम जब प्रोग्रेशन हुआ तो इंडिया में नहीं है। तो क्वेश्चन ये था कि इंडिया में क्यों नहीं है। और उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में पता लगा कि जब तक मैं आंसर ढूंढ रहा हूँ तो वो तो मेरे हाथ से चली जाएगी, मेरा बेटे को मैं क्या जवाब दूंगा। और उस जर्नी में बहुत सारे कुसुम मिले, बहुत सारे रवि जी मिले जो दोज वर डाइंग क्योंकि मेडिसिन नहीं थी। तो दैट्स हाउ आई बिकेम ए पेशेंट एडवोकेट कि कुछ चेंज करना है सिस्टम में। एंड देन वी स्टार्टेड to become fighting with every doctor, hospitals, and then became with a friend with doctors, hospitals, policy makers, MLAs, MP, DCGI office, pharma companies। लड़ाई हुई, झगड़े हुए, दोस्ती हुए, कुछ अच्छे लोग मिले इस जर्नी में। मैं रवि जी को से अभी 1 मंथ पहले ही मिला हूँ और मैंने उन्हें बोला कि हमारी बदनसीबी है कि हम कैंसर होने के बाद मिले, पर इस जर्नी में अच्छे लोग बहुत मिले जब आगे। एंड देन वन बाय वन दैट मीडिया कैंपेन, देन एडवोकेसी, मीटिंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनको समझाना क्या चाहिए, और एक के बाद एक आई। एंड कुसुम ने इस जर्नी में 7 क्लिनिकल ट्रायल या रिसर्च में पार्टिसिपेट किया। तो दूसरी लफ्जों में कि वो 7 बार इंडिया की फर्स्ट पेशेंट बनी टू गेट दैट मेडिसिन इन इंडिया। हर बार वो पहली पेशेंट थी जब मैं इंडिया में मेडिसिन लेकर आया। उसके लिए और इजी नहीं था, बिग मीडिया हाउस, पीपल, इधर उधर जाना, सब बिक जाना। पर उन 7 साल में उसको 7 साल की जिंदगी भी मिली और दैट गिविंग मी स्टिल स्माइल। सो दैट्स हाउ आई बिकेम पैशनेट एंड कनेक्टेड विद पेशेंट एडवोकेसी। Thank you, Vivek ji, for sharing Kusum with us. आपके थ्रू कुसुम को जान के ये पता चलता है कि वो कितनी एक वंडरफुल ह्यूमन बीइंग थी और उनके कारण कितने लोग आज बेनिफिट कर रहे हैं। एंड थैंक यू विवेक जी फॉर योर एफर्ट्स। आसान नहीं है, लेकिन आपने जो एफर्ट्स किए आज उसके जो बेनिफिट्स हैं, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स उसको आज उससे बेनिफिट कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट and may you keep inspiring a lot of other people to get into the line of patient advocacy. Do we have Dr. Kumar here with us? I don't see Dr. Kumar here. No worries. So, Dr. Narayan, Dr. Warrier, I have a question for you. I'm hearing. Yeah. So, what in your opinion are the challenges faced by patients in a developing country like India? There are way too many. So when we talk of specifically lung cancer, what in your opinion are the challenges that they come across? Yeah, thank you so much, Vandana. Before answering that question, I must appreciate the efforts taken by Mr. Vivek Tomar and how he found the system, and then it is really amazing. So all my regards to Tomar. So the problems as clinicians we face while treating patients are many. The number one is that 25 years back when we have started treating patients, the treatment available for lung cancer, advanced lung cancer, was only some supportive care, where you don't have anything to offer them. So we will tell them that you take them home and pray. That is the only way we can, that was the situation. Then subsequently, chemotherapy came as one of the main treatment modality, but it's again, it was very palliative. And people used to live only for some 6 to 8 months when the cancer is diagnosed at advanced stage. But today, we have wonderful medicines, wonderful treatment modalities, different treatment modalities, and almost 50 to 60% of cancers, we have excellent medications, excellent treatment modalities, and we know that these patients are going to live long.
at least some of these treatments, some of the patients whom we have put them on the latest tyrosine kinase inhibitors are living more than 5 years, 7 years, almost 8 years now, which is really amazing. But the problem is this kind of treatment is affordable to probably less than 1% of our population. When you take the patient population, in the only 1% or even less than 1% can afford this kind of a treatment. This is something which is very causing high stress to us as a clinicians. We know that there is a treatment available, but unfortunately not many are like Vivek, so that they can get into the clinical trials. They don't know about the clinical trials, and nobody is there to tell them, explain them about the clinical trials. And the drugs are extremely costly, and many times I think like this: if you are put in that situation of the patient, it's for your father or your very close relative, will you be able to put them on that particular treatment? The answer is no. So that causes severe stress to us as clinicians, and we know that when we will try whatever the possible way, we will try to help them. Like we will get some compassionate use of these tablets. We will write to the company, we will write to the various organizations, all we can do. But unfortunately, still these kind of the modern treatment, the so-called modern treatment, will be available only for less than 1%. Here we need to have some kind of relaxation of the rules by government. Unless the government comes forward, we won't be able to do it. The government can revisit rethink about the patent laws, and after at least instead of the 10 years waiting for the generic to come, at least 2 or 3 years, it should be restricted to 2 to 3 years, so that the drugs are made cheaper, and most of the at least some fraction of these patients can be treated. So that is one thing, one important issue we all face, the challenges we face in the treatment of lung cancer. Second is definitely these require very frequent monitoring, and the kind of specialists are available. I don't think that many of our patients can they can approach these centers again because of the distance and other factors, like not many will be there at home to take care of these patients. These are some of the challenges. Then third one is these drugs, our patients are not aware of the various the symptoms, and whenever they get complications, they are not able to bring the patients to the hospital. So and also the radiotherapy, the radiation, the modern type of radiation is not widely available. So the lack of infrastructure is another part of it. But in a place like Kerala, where I am working right now, there are centers, at least in 60 kilometers there is one center. So this kind of advances in the infrastructure will definitely help in at least taking care of some of the challenges these patients face. I'm aware of the fact that the other parts of India, many places, the patients cannot get an equitable type of treatment. That means both without any challenges, all patients are treated in the same way, which is it's a dream of all of us, but unfortunately it is a very distant dream, and I think these are some of the challenges. Over to Vandana. Yeah, thank you, Dr. Warrier. And how heartbreaking it is when we tell a patient that, look, there is a treatment available, but you can't afford it. Imagine what goes through the patient's mind and the psyche, that there is something that, you know, can enable the patient to live, just because the patient comes from a rural background or doesn't have enough money.
the patient does not have access to the treatment. And I think that is a very, very pertinent point where a patient advocate can definitely help raise the issue and get the government to step in and bring down the cost. Another, I think, very pertinent point, Dr. Warrier, that you raised was the infrastructure. I think Kerala model needs to be replicated to the other parts of India, because India is a huge country and the amount of rural population that we have is unthinkable. And it is not that the treatment is not available, it is the inaccessibility to the treatment because of there are multiple factors which prevent our patients from reaching out to the correct places, to the correct hospitals, getting the correct medication. So thank you for sharing your views. Dr. Anand, if I may ask you here, as a clinician who's practicing in Malaysia, how is the situation there in terms of the challenges that the patients face? Well, it's interesting that I think we all know lung cancer is, it's the commonest cancer and commonest cancer killer across the globe. And, I echo a lot of what Dr. Warrier mentioned. Maybe I can just highlight two areas which I think are challenges. One is certainly in Malaysia, we are burdened with a lot of advanced stage or late stage presentation. Obviously compared to India, we're a tiny country, but we also have a urban-rural divide. And where I practice is in the capital city in Kuala Lumpur. But even here, I can share with all of you, awareness is still quite poor and quite low. And, 90 to 95% of the cases that we see here are being detected in stage 3 and stage 4. And despite the tremendous advances, in advanced lung cancer care, we are still outside that, remit of curative treatment. So that's a major issue in terms of the awareness levels. We may have state-of-the-art low-dose CT scanners, but I think it's getting the general public to be aware, what are the signs and symptoms, who are in the high-risk groups, who will benefit from screening and so forth. The other issue, I think, is very similar to what you experience in India, financial toxicity. I think it's been mentioned, we've got wonderful drugs. We are in this era of precision medicine. We talk about precision diagnostics, especially with lung cancer, all the NGS testing, genomic molecular profiling. I think a few of the panelists have mentioned whether it's EGFR, ALK, and drugs, the oral therapies, which are very efficacious, but as been mentioned, they are prohibitively expensive. Even here in Malaysia, on average, maybe it's about $4,000 or $5,000 per month, and very, very few people can afford that. So those are the two key challenges. And I think one of the ways we try to address that, certainly with awareness, is just continued education. We need to try and destigmatize the disease. We are starting to see maybe 25-30% of the cases of lung cancer here in Malaysia affecting non-smokers, of which women are overrepresented. And sadly, I think it's something like this that may increase the empathy for the disease. Traditionally, we've always thought of it as a male smoker's disease. And in terms of the, just very briefly, in terms of trying to address this issue of financial toxicity, I mean, I work closely with oncologists, and they're very clever in recruiting their patients into clinical trials to try and get the patients treatments that may be heavily sponsored or free. Because, as you mentioned, it is very disheartening when you have highly effective drugs that improve disease or progression-free survival, but the patients can't avail of it because of the issue of cost. Yeah. Thank you, Dr. Anand. And I think the incidence of lung cancer are pretty much India or Malaysia or worldwide. I think they seem to be rising, and the number of women that are getting affected is also, it is alarming. There are various factors, so we don't have the time to get into that. But thank you for sharing your views. Now, and I'm going to ask Ravi ji. Ravi ji, एक तो सबसे पहले आपका शुक्रिया तहे दिल से. आप एक्टिव ट्रीटमेंट आपका चल रहा है और आप
ट्रीटमेंट के दौरान एक पेशेंट एडवोकेट का भी काम करते हैं, दूसरों को इंस्पायर करते हैं, रेगुलरली आर्टिकल्स लिखते हैं। रवि जी हमारे व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहती हूँ, बीबीसी के साथ जर्नलिस्ट हैं और कॉन्स्टेंटली अवेयरनेस रेज करने की कोशिश करते हैं। उनका ट्रीटमेंट आसान नहीं है, वो रेगुलर कीमोथेरेपी पे हैं, लेकिन फिर भी वो कभी भी मौका मिले, जैसे हम लोग उनको रीच करते हैं, कभी ना नहीं बोलते। तो थैंक यू रवि जी आज आने के लिए और नॉट ओनली इंस्पायर करने के लिए बट अपने व्यूज भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो रवि जी, आपने पैनल डिस्कशन में सुना, डॉक्टर्स की बातें भी सुनी, विवेक जी की बातें भी सुनी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ एज अ पेशेंट, आप जो रेगुलर अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, सो डायग्नोसिस से लेके अब तक आपको क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? क्योंकि चैलेंजेस चाहे पेशेंट रूरल इंडिया से हो चाहे अर्बन इंडिया से हो, चैलेंजेस प्रीटी मच सेम ही है, तो आप थोड़ा हमें बताएंगे। थैंक यू वंदना जी, पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए, जो बातें हैं जो विवेक जी ने कही हैं या डॉक्टर आनंद डॉक्टर नारायण ने कहा है, ऑलमोस्ट उसी का एक्सटेंशन मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट चीज़ें वही हैं। बात जहाँ तक होती है रूरल इंडिया की या फिर अर्बन इंडिया की, जो टॉक्सिसिटी है ना उसकी फिनेंशियल, जब डायग्नोस होता है आपको कैंसर या कोई भी उस तरह की बीमारी जो जिसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो वो पैरेलल ही है। दिल्ली में रहने वाले आदमी के लिए भी वही चैलेंज है जो बिहार के किसी गांव में रहने वाला आदमी, उसके पास भी चैलेंज है। आप देखिए ना, हम लोग इंडिया में रहते हैं और न केवल इंडिया बल्कि कई सारे देश, इवन मलेशिया भी, कई जगहों पे अगर 1 करोड़ की तनख्वाह आपको मिल गई ना तो अखबार में बॉटम खबर छपती है पहले पन्ने पर, 1 करोड़ का पैकेज मिला है। 1 करोड़ के पैकेज का मतलब क्या होता है? महीने का 10 लाख रुपया, ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास यही हुआ ना। और अगर आपको कोई डॉक्टर कहता है कि आपको एक ओसिमरटिनिब दवा खानी है जिसकी महीने की कीमत 5 लाख रुपए है, हाउ कैन यू मैनेज? कैसे खरीद लेंगे? तो पहला तो ये दिमाग साफ करना पड़ेगा कि रूरल और अर्बन इंडिया वाला कोई मामला नहीं है, मामला है सोच का। जो विवेक जी कह रहे थे कि एक यंग लेडी जिनका 3 साल का बेटा है, उनको लंग कैंसर डायग्नोस होता है स्टेज 4 का, और दवाइयां नहीं है भारत में, उसके लिए उनके हस्बैंड को, पूरी फैमिली को स्ट्रगल करना पड़ता है क्लिनिकल ट्रायल्स हो। तो ये एक बड़ा खराब है हमारे देश में। दूसरा कि जो डायग्नोसिस का मामला होता है वो ऑलमोस्ट हर जगह है, जो हम लोग पढ़ते रहते हैं लंग कैंसर को लेकर। ये डायग्नोसिस सिम्टम्स क्योंकि नहीं होते तो डायग्नोसिस लेट होता है, और जब लेट होता है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते। फिर हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि हम इनको 4 साल की लाइफ देंगे, 5 साल की लाइफ देंगे, 7 साल की लाइफ देंगे, 8 साल की लाइफ देंगे। हमारे पास यही डेटा होता है। अगर कोई 10 साल तक रह गया तो उसको बहुत शोकेस करते हैं कि यार ये लेडी तो यहाँ है अमेरिका में, ये तो 10 साल से सर्वाइव कर रही। मतलब हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी किसी भी मरीज के लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए लगाई जाती है। और वो भी जो डॉक्टर नारायण भी कह रहे थे, काफी अच्छी तरीके से उन्होंने कहा कि अब है कि कितने लोग अफोर्ड करते हैं, अफोर्डेबल प्राइस है कि नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, मुझे लगता है 7-8 दिन पहले टीएमएच मुंबई के मरीजों पे बेस्ड रिपोर्ट छपी थी। उसमें था कि एक दवा है जो दवा 3% से भी कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं। अब दवा तो बहुत बेहतरीन है, इम्यूनोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी दे दी जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। 3% लोग अफोर्ड करते हैं, और उन 3% लोगों को भी उसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर आप इसके पीछे जाएंगी तो बड़ी लंबी कहानी है। ये भी इशू है। तीसरा जो होता है कि हेल्थ केयर सिस्टम, जिसकी वकालत विवेक जी या इस तरह के लोग करते हैं, या हम लोग इन जैसे लोगों को फॉलो करते हैं। क्योंकि मुझे जब कैंसर हुआ, मुझे पता चला 2 साल पहले कि मुझे लंग कैंसर स्टेज 4 का है, तो मैंने सर्च करना शुरू किया कि भाई क्या है, इंटरनेट पे कुछ है कि नहीं इसके बारे में। तो मैंने विवेक जी की कहानी पढ़ी, कुसुम जी की कहानी पढ़ी, मैं काफी इंस्पायर हुआ। मुझे लगा चलो कोई तो है जो लड़ रहा है, कहीं पे कुछ आशा तो है, कुछ तो होप है। तो इस तरह के जो लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, एडवोकेसी को काफी अच्छा डिफाइन किया विवेक जी ने कि एडवोकेसी एग्जैक्टली है क्या, या सपोर्ट ग्रुप क्या है। होता क्या है इंडिया में कि हम अपने हिस्से का काम छोड़ के, मेरा हिस्सा वाला तो प्रिजर्व रहने दो, वंदना जी के हिस्से वाला काम मुझे करना है। वंदना जी ने क्यों नहीं किया?
पेशेंट एडवोकेसी की बात जब भारत में आती है तो सबसे बड़ी दिक्कत पेशेंट एडवोकेसी की ये है, आज हम मान लीजिए कि हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, एस्ट्राजेनेका इसको स्पॉन्सर कर रहा है। एस्ट्राजेनेका ने कितना पार्टिसिपेट किया है अपने सीएसआर में ऐसे मरीजों को लेने के लिए, ऐसे मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए। जो बड़े अस्पताल हैं, जो बड़े नेम फेम के डॉक्टर्स हैं, उनका क्या पार्टिसिपेशन है? तो आप मॉर्फिन की कीमत कम करेंगे, आप पैरासीटामोल की कीमत कम करेंगे, और आप चाहेंगे कि आप पेशेंट एडवोकेसी की बात करें और एक प्रोग्राम अगर आपने कर लिया कहीं पे तो आप एडवोकेसी कर लेंगे। सॉरी टू से आप नहीं कर सकते। हम सब लोग अपने अपने हिस्से की मार्केटिंग कर रहे हैं। मैंने इंदौर में भी कहा था, विवेक जी थे वहां पे, कैंसर एक बीमारी है, वेरी गुड, कैंसर एक मार्केट भी है और हम सब लोग उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। और ये भारत के लिए वंदना जी मुझे लगता है सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हम अपने हिस्से का काम नहीं करना चाहते, हम दूसरे के हिस्से की बात करते हैं। हम कहते हैं क्यों उपलब्ध नहीं है? अगर ओसीमर्टिनिब एक टैबलेट है जो 5,000 रुपए में बिकती है, क्यों नहीं भारत में 5,000 रुपए मिल रही है वो टैबलेट? कितने लोग 1 करोड़ की तनख्वाह पे काम करते हैं भारत में? कितने डॉक्टर्स की तनख्वाह है 1 करोड़ रुपए? मुझे बताइए जरा सा। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जहां मेरा इलाज चल रहा है, वहीं पे कितने डॉक्टर्स की सैलरी कितनी है? आपके 5 लाख रुपए की दवा 5 साल तक खा पाएंगे लगातार? अगर आपके पास बच्चे हैं, आप बीवी हो, आपका घर है तो ये बड़ी दिक्कत है। मुझे लगता है कि इसको एड्रेस करना चाहिए, और विवेक जी जैसे लोग जो है काफी इंस्पायर करते हैं, ये लोग कर रहे हैं, और हम लोग तो अपने हिस्से का काम करें। देखिए, हम मेरा जो कहा ना कि वो इत्तेफाकन आ गए, कोई डिजाइन करके एडवोकेसी शुरू नहीं की, क्योंकि बीमार हो गए। अब बीमार हो गए तो अब कुछ तो करेंगे ना। मेरा जो सोसाइटी ने मुझे जो दिया है, अगर मुझे सोसाइटी को पे बैक करना है, तो अगर मैं अपनी बातों से पे बैक कर सकता हूँ करूंगा, अगर मैं पैसे से पे बैक कर सकता हूँ उससे करूंगा, अगर मेरे हिस्से की शारीरिक मेहनत से पे बैक हो सकता है तो उसको करूंगा। तो ऐसे लोग पे बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पॉजिटिव बातें भी हैं। लंग कनेक्ट जिसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मुझे यहाँ बुलाया गया है। लंग कनेक्ट एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे लंग कैंसर के सारे मरीज पूरे देश से जुड़ते हैं और आपस में बात करते हैं। कई चीजें कॉमन होती है, जो देबूदा बता रहे थे, जो प्रेमचंद गुप्ता साहब ने बताया, कई चीजें कॉमन है, कई सिम्टम्स मुझे भी होते हैं। तो ऐसी चीजें हो रही हैं, डार्क एग्जाम नहीं है, रोशनी है, और बहुत अच्छी रोशनी है। उस रोशनी को और ज्यादा इनरिच करने की जरूरत है, जो दुर्भाग्य से अभी हम लोग नहीं कर। थैंक यू रवि जी, आपने बहुत ही उम्दा पॉइंट्स उठाए, और आप जानते हैं मैं भी एक बहुत पैशनेट एडवोकेट हूँ और मैं लिखती हूँ और इस सब के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपने बोली वो रियल इश्यूज हैं, वो असली प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे पेशेंट्स इंडिया में फेस करते हैं, लंग कैंसर पेशेंट्स। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, साथ में ये भी कहना चाहती हूँ रवि जी, चाहे किसी भी प्रकार का एफर्ट हो, वो एडवोकेसी के लिए बहुत सपोर्ट करता है। आपका यहाँ आना ही आज एक एडवोकेसी, पेशेंट एडवोकेसी किसी को सपोर्ट करता है। सो कोई भी एफर्ट छोटा नहीं होता। सो थैंक यू हमारे कॉज को स्ट्रेंथ देने के लिए, क्योंकि जितने लोग इकट्ठे होंगे उतना एडवोकेसी का केस स्ट्रॉन्गर होगा। सो थैंक यू यहाँ आने के लिए और हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ रवि जी ये कि अगर आज लंग कनेक्ट जैसा फोरम है या विवेक जी जैसे पेशेंट एडवोकेट्स हैं, उनका क्या रोल है एक पेशेंट की लाइफ में, और हम क्या कर सकते हैं आपके ओपिनियन में कि हम ऐसा सिस्टम क्रिएट करें और एनकरेज करें लोगों को पेशेंट एडवोकेट्स बनने के लिए? देखिए, पेशेंट एडवोकेसी का तो काफी महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि अगर पेशेंट एडवोकेट्स नहीं होंगे तो जो बात अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, ये प्लेटफॉर्म ही नहीं होता, हम बात नहीं कर रहे होते। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए, ऐसी बातों के लिए विवेक जैसे लोगों का रहना जरूरी है, क्योंकि वो बात करें। ये पे एक ब्रिज होता है, एक गैप है। एक गवर्नमेंट है, उसका एक अपना सिस्टम है, एक पेशेंट है, वो बीमार है, बीच में कई सारे पार्ट्स हैं, कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, केयर गिवर्स हैं, हॉस्पिटल है, दवा कंपनियां हैं, कई सारे लोग हैं। ये ब्रिज एक चाहिए, एक ऐसा पुल चाहिए जो इन सब चीजों को जोड़ सके, और इसलिए ही पेशेंट एडवोकेट्स की जरूरत है, विवेक जैसे लोगों की, ताकि उसको भरा जा सके। कोई गवर्नमेंट को बात जाके समझाए तो सही कि हाँ भाई ये होता है। अगर गवर्नमेंट को पता ही नहीं है
कि जो आयुष्मान भारत योजना सरकार चलाती है उसमें कौन कौन सी दवाइयां इम्पैनल्ड हैं या नहीं है। अगर दवा इम्पैनल्ड ही नहीं है तो आयुष्मान भारत योजना का फायदा क्या उठा पाएंगे। तो ये इसके लिए पेशेंट एडवोकेट्स की जरूरत है। बची बात जो लंग कनेक्ट की बात आप कर रही थी, लंग कनेक्ट के साथ क्या है कि अब लंग कनेक्ट कैसे शुरू हुआ, मैं थोड़ी सी कहानी 2 मिनट में बताऊंगा। कि जब कोविड था, कोविड के वक्त, जैसे मुझे जब डायग्नोस हुआ तो कोविड का सेकेंड वेव था और काफी स्थिति खराब थी। तो कई लोग, मुझे भी लोगों ने कहा कि क्यों जा रहे हैं आप, मत जाइए मुंबई, फॉलोअप नहीं होगा। हम लोग गए तो उस वक्त जिन लोगों का अप्रोच नहीं था, कोई कनेक्ट नहीं था किसी से, तो लंग कनेक्ट ने उनको एक कनेक्शन का प्लेटफॉर्म दिया कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके बात कर लीजिए, कम से कम ये तो पता चल जाएगा ठीक है सीटी स्कैन अगर हमने आज नहीं कराया है तो इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है या फर्क पड़ने वाला है, या अगर मुझे जेफिटिनिव खानी है दवा वो नहीं मिल रही है तो क्या उसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास है, या पेमोटेरिक्स नहीं मिल रहा है तो हम कीमोथेरेपी में कौन सी दवा ले सकते हैं। तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं लंग कनेक्ट जैसे, वो उनका रोल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कनेक्ट कर देते हैं आपको, और कनेक्शन काफी आसान है। इसलिए आसान है कि वहां पे जैसे हम 5 लोग यहाँ बात कर रहे हैं, मैं एक पेशेंट भी हूँ और मैं थोड़ी बहुत एडवोकेसी भी करता हूँ। विवेक जी पेशेंट एडवोकेट है, डॉक्टर नारायण, डॉक्टर आनंद हैं, आप हैं। तो लंग कनेक्ट पे क्या है कि डॉक्टर्स भी हैं, डाइटिशियंस भी हैं, पेशेंट्स भी हैं, केयर गिवर्स भी हैं। तो जब आपस में बात करते हैं तो कई चीजों का सोल्यूशन निकल जाता है। जैसे हम लोग सुबह बात कर रहे थे आपसे कि रैसेस हो जाते हैं, तो ये रैसेस कॉमन है, सिर्फ रवि प्रकाश को नहीं होता, ये कई लोगों को हो जाता है। तो इसलिए लंग कनेक्ट की जैसे प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है, और एडवोकेट्स तो इसलिए चाहिए कि ताकि एक जो ब्रिज है वो ब्रिज बन पाए गवर्नमेंट तक, क्योंकि आखिर निर्णय कौन लेगा, निर्णय तो सरकार ही लेगी ना, कि सबसे पावरफुल तो सरकार ही। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, भारत एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट तक बात पहुंचे, गवर्नमेंट चीजों को समझे, इसके लिए पेशेंट एडवोकेट्स का मजबूत होना जरूरी है, जिन्हें मजबूत करना चाहिए सब लोगों को, और इसमें सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हर आदमी स्टेक होल्डर है, सिर्फ हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मा कंपनीज हैं। तो इन सब, अगर ये सब लोग मिलकर किसी पेशेंट एडवोकेट को सपोर्ट करेंगे तो उनकी बात गवर्नमेंट तक पहुंचेगी, और गवर्नमेंट तक पहुंचेगी तो गवर्नमेंट कोई पहली थोड़ी है, उसके पास भी कान है, उनके पास भी आंख है, वो डिसाइड करेंगे कि हाँ ऐसा करना चाहिए हमें कि भाई हम मरीजों को सपोर्ट करें। क्यों आप पैरासीटामोल की कीमत कम करके क्या करेंगे? तो अगर पेशेंट एडवोकेट जाके बताएगा कि पैरासीटामोल ने उसे मार्टिनी की कीमत कम चाहिए, जो 15 लाख रुपए की दवा अगर 15,000 रुपए में मिल रही है, तो यही कमाल है ना। इसी कमाल के लिए पेशेंट एडवोकेट्स की जरूरत है, मुझे लगता है। थैंक यू रवि जी अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर कुमार प्रभाष भी अभी जुड़े हैं। डॉक्टर कुमार HOD मेडिकल ऑन्कोलॉजी, TMH प्रोफेसर डॉक्टर कुमार हमारे साथ हैं। वेलकम डॉक्टर कुमार। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप तो बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं लंग कैंसर के, तो व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पेशेंट्स इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, जो खासकर लंग कैंसर के पेशेंट्स हैं डॉक्टर कुमार? डॉक्टर कुमार आप म्यूट पे हैं। I think there is some connectivity issue. We'll go back to Dr. Kumar. Dr. Kumar, हाँ जी, आप म्यूट पे हैं जी। आवाज नहीं आ रही डॉक्टर कुमार आपकी। डॉक्टर कुमार, I can't hear you. Some connectivity problem. We'll come back to you, Dr. Kumar. So, Dr. Narayan, this is a question for you. How do you think when we have lung cancer advocates, can they support the patients psychosocially also? Very much, very much. The reason being, one of the supports they require is psychologically. Unless they are psychologically strong, none of these advances will not reach them.
So I feel that each patient should be supported individually and counseled, and according to their concerns. Unless you address all these concerns, you won't be able to treat them successfully. Whatever the statistical amazing figures we project, like overall survival and disease-free survival and all, will be met only if these issues are addressed. And if the patient is strong and they can beat any of these statistical predictions. So what I feel is every hospital, every clinic should have a psychologist who can really address their psychological needs, preferably from the treating doctor itself. But sometimes you cannot. If the doctor is very busy, and at least the psychologist help can be taken. And I generally counsel them. Still, I feel that a much more structured psychological approach is required. And because many problems are hidden and will not be revealed unless you specifically ask them, and also psychologically analyze, then only you can find out these problems. So one of the key elements for the successful outcome of the treatment is psychological support. Thank you, Dr. Warrier. I work in the. I'm a counselor, and okay. I believe that till our patients are supported emotionally, we cannot actually claim to treat them totally. So it's very important to provide psychosocial support to them. Dr. Anand, in your opinion, how important is the role of a patient advocate in providing psychosocial support to our patients and caregivers? Yeah, I completely agree. Unfortunately, as clinicians, surgeons, physicians, oncologists, there's a tendency, we focus very much on the physical, signs and symptoms, on the disease pathology. That's what we're trained to do, on the treatment options. And sometimes, perhaps we view that person as a patient and less so as a human being. And that's where I think a patient advocate can be incredibly valuable in helping to bridge that, as you say, provide the necessary hope, that whole psychosocial support. I mean, there's also a time constraint. When we see patients in the clinic, we're not able to, I suppose, the emphasis is on the clinical management, but there's a person beneath all of that, and so I think it's invaluable. And I agree what both of you have said. You can have the best treatments, be it surgery or chemotherapy, immunotherapy, but if the mental state and the social support is lacking, then that patient won't get the best, won't get the benefit from those treatments. Yeah. Thanks, Dr. Anand. I think there is some connectivity issue, and we've not been able to get Dr. Kumar in the discussion. We'll wait if he's. We'll wait and see if he's able to join us. So now I have a question for Vivek ji. Vivek ji, how difficult, in your opinion, is to become a patient advocate India में? और क्या challenges आपको आए जो भी पेशेंट एडवोकेट बनना चाहता है उसको डिसवेड कर देते हैं, क्योंकि इंडिया में आसान तो कुछ भी नहीं है विवेक जी. ऑब्स्टिकल्स पहले आते हैं और विजन बाद में बनती है. तो आपके ओपिनियन में क्या चैलेंजेस आते हैं और आपने क्या चैलेंजेस फेस किए विवेक जी? मैं इसमें क्वेश्चन खुद ही ऐड कर देता हूँ. जब it becomes much more challenging when it is lung cancer, because lung cancer में एक word है stigma that is attached with it. Last month अक्टूबर में breast cancer awareness month था. हैदराबाद में चार मीनार से लेके मुंबई में ताज तक, दिल्ली में इंडिया गेट से लेके कोची में रेलवे स्टेशन तक सब पिंक था. और दिस इज लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ नवंबर में. और हम बात करते हुए भी डरते हैं बिकॉज कहा जाता है कि स्मोकर्स की डिजीज है. तो जस्ट फ्यू थिंग्स टू बी वेरी क्लियर, एंड दैट इज ईच ऑफ अस रोल. पहली बात तो कि
patient advocate is not only patient responsibility and caregiver responsibility. Everyone can be patient advocate जो इस लड़ाई को लड़ना चाहता है कि क्या है और क्या होना चाहिए. And doctors who treat patients is not patient advocate, but doctors along with you treating patient and work with everyone to change the system is patient advocate. Same for implemented to us and everyone, and it's with due respect to everyone. Means it's like ocean, you can't do everything, just focus what you can do and should do or want to do. So that's the first step, and that's the challenge. And the thing about this stigma is रवि जी ने बोला हमारी वीडियोस सोशल मीडिया पे हैं, बहुत सारे चैनल ने कवर किया इस जर्नी में. अगर आप कभी इनके कमेंट्स पढ़ेंगे ना, आप विश्वास नहीं करेंगे जितनी गालियां हमें मिली हैं. यूजुअली आजकल उतनी सेलिब्रिटीज को भी नहीं मिलती हैं, बॉलीवुड वालों को, क्योंकि जैसे ही हमने बोलना शुरू किया कि लंग कैंसर और ये सब झूठ बोल रहे हैं, आपने स्मोकिंग की होगी, एंड लिटरली कुसुम को गालियां मिली हैं, एंड देन आपने नहीं की होगी, आपके माँ बाप ने की होगी, एंड यू कांट कंट्रोल इट. ये तो मीडिया के साथ में था. व्हेन वी स्टार्टेड टू वर्क के भैया, बिकॉज आई लिव कुसुम वाज एन एग्जांपल एंड एवरीवन ऑफ एज एन एग्जांपल. इवन पैरासीटामोल खा रहे हैं, ये दुनिया में जब ही आई थी जब इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, ठीक है, जब रिसर्च हुई थी. सिंपल थिंग इज रिसर्च सेव्स लाइफ. रिसर्च नहीं होगी तो कुछ नहीं है, और इंडिया में रिसर्च का तो सिस्टम ही नहीं है. जेनरिक तो जब ही आएगी ना, जब इनोवेशन रिसर्च आएगी. सो जब हमने उसके लिए काम करना शुरू किया तो बोले थे आप तो गिनी पिग हो. And I remember one thing Kusum said very beautifully in one of her speech to media when media person asked, how do you like being guinea pig? And she said that if that being guinea pig is making me alive for last 6 years, I am proud to be a guinea pig. So, these are the things we face. So how to me? And now this thing of stigma, no one deserves cancer, whether smokers or non-smokers. That's very clear. And even for non-smokers and thing, the fact is 50% of more than 50% is the official data, but I say maximum of the new patients being diagnosed are non-smokers, young, and mostly females. We also need to understand that the woman died because of breast cancer. उससे दो मतलब women died because of combination of breast cancer, prostate cancer and colon cancer. उससे ज्यादा women is being mutilated because of lung cancer से ज्यादा मर रही हैं. नॉन स्मोकर ज्यादा मर रहे हैं. तो ये जो स्टिग्मा है ना लंग कैंसर में, डरते हैं. मतलब आई एम थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स व्हाट्सएवर कि हम बात कर रहे हैं, वरना इजी नहीं है इस पे बात करना. तो पेशेंट एडवोकेसी की यहाँ पे आ जाती है. एंड द अदर प्रॉब्लम इज स्टेक होल्डर्स. सो मीडिया का मैंने एग्जाम्पल लिया, तो one has to be very brave, one has to risk their career, mental peace and family, चाहे वो डॉक्टर हो, आप हो, मैं हूँ, रवि जी हो, क्योंकि कब किसको किस बात का बुरा लग जाता है. इन सोशल मीडिया के जमाने में बहुत सारा आपको मेंटल प्रेशर झेलना पड़ता है, इवन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर्स. बट आई हैव एन एग्जाम्पल जहाँ पे मेरी दो फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर से अलग अलग टाइम पे कुछ रिसर्च को लेके, कुछ चेंज करने के लिए, सिस्टम को लेके झगड़ा हुआ. एक से आज के साथ 12 साल भी बात नहीं हुई है, दूसरे के साथ में आई एम हैविंग लंच एंड डिनर्स. सो क्योंकि आपको चैलेंज करना पड़ता है. इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम, यू हैव टू चैलेंज. यू मे बी रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग, एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, बट other has to change the system. So it is a journey, it is a partnership. So हर लेवल पे है. और I agree with Dr. Anand, Dr. Narayanankutty that in India यूएस में जहाँ 100 पेशेंट्स पे एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, इंडियन में 16,000 पेशेंट पे एक ऑन्कोलॉजिस्ट है. मतलब they are not wrong, we are not wrong, then who is wrong? I think the system is wrong and we have to challenge it. It's a tough journey. आप सब चीज नहीं कर सकते, तो पर ये समझिए कि आप जो कर सकते हैं करते रहिए. रवि जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली थी कि हम बोल रहे हैं, ठीक है, उनको आवाज जा रही है, वे रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, सुन तो वे रहे हैं. हमारा काम है उन्हें सुनाना है, साथ मिलके चलना है. 99.9% लोग इस जर्नी में आपको बोलेंगे कि साथ नहीं देंगे, पर जो 0.3% मिलेंगे ना, दे विल बी योर बेस्ट कंपेनियन एंड दे विल चेंज इंडिया कैंसर पेशेंट हेल्थ केयर सिस्टम, एंड वी आर विद देम. सो या, थैंक यू. Thank you, Ravi ji. Very well said. Dr. Kumar, आप सुन सकते हैं हमें? Are you able to hear us? Definitely would. I would like to get. I can. Can you hear me? Right.
Yes, very well, Dr. Kumar. I can't close the session without taking inputs from you. So, Dr. Kumar, my question is very, very simple. In your opinion, what are the challenges that lung cancer patients face in India? Can you repeat the question, and can you hear me, madam? Yeah, I can hear you, Dr. Kumar. Can you hear me? Yes, now I can hear you. Can you repeat the question? Okay. The question is, what, in your opinion, are the challenges that lung cancer patients in India face? Madam, many, I think so. A whole lot of people have spoken about it. Many of them will be repetition, and in my experience, I always say that no, not being in their shoes, I can't say exactly, but I do feel many of them interacting with them, being a caregiver for people around. It starts from diagnosing them early, then after diagnosis to having the testing being done, those special tests, then having access to treatment, then able to sustain those treatment, and then having the biases of the society, what they have to go through in this situation. And majority of the patient in this situation, they are middle-aged people, and then you do have the whole family which gets disrupted. So it is one of the tumor. It is true for majority of the cancer, and especially for lung cancer being diagnosed, especially in an advanced stage. These challenges are there for those individual and also for the whole family. And as I suggested, these challenges are at multiple steps. And I did hear from many people that they elaborated and very nicely that these are not one challenges, and where we also heard from people how they have overcome it by their ability. So I think so. Right. I think we've lost the audio again, Dr. Kumar. Dr. Kumar, we've lost your audio again. So Dr. Kumar, we've lost your audio again. I'm so sorry, we've lost your audio again. Before I close this session, I have a question for everybody on this panel. How can we together make India aware or make Malaysia aware of lung cancer advocates and lung cancer advocacy groups? I'll start with you, Ravi ji. कैसे अवेयर कर सकते हैं कलेक्टिवली? देखिए, हम ही खुद ही अवेयर होना पड़ेगा. अगर हम अवेयर हैं तो हम पूरी दुनिया को अवेयर कर सकते हैं, इवन इन इंडिया, इवन इन मलेशिया या किसी भी कंट्री में. क्योंकि क्या होता है ना कि हम अवेयर कई मामलों में नहीं हैं और हमें ये नहीं पता है कि जो गैप है उस गैप को कैसे भरना है. तो अगर हम गैप को हमने भर लिया, हमें पता चल गया कि हम ऐसे करके इस आगे बढ़ सकते हैं, तो किसी भी देश में आप लंग कैंसर क्या किसी भी कैंसर की एडवोकेसी काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं. जी, थैंक यू रवि जी. विवेक जी, योर व्यूज क्विकली. Losing is not an option. Perfectly said. Dr. Anand, your views on how can we make people in general aware about advocacy and advocacy groups? I mean, I think that's right. Patient advocate, it doesn't have, anyone can do it, as I think Mr. Vivek mentioned previously. But quite often, the cancer survivor, the caregiver, they have been through that journey, and their testimony is immensely powerful. But I guess collectively, NGOs like the one I have, Lung Cancer Network Malaysia, clinicians, all the different stakeholders, patients, caregivers, just have to up our game. As you said, giving up is not an option. There hasn't been a more exciting time in terms of treating lung cancer. Tremendous advances. It's no longer a death sentence. And we just have to provide the necessary hope and shepherd patients on that journey. And it's something that's beyond clinicians and doctors alone. So it's a shared responsibility, everyone working together. Yeah. Thanks, Dr. Anand. Dr. Warrier, your views.
Yeah, if you want to improve the patient advocacy, the only way is to create awareness about in the society, media. I'll tell you, and without the media, we cannot create any type of awareness. So the celebrities should come forward, and the society should change their mind. More and more awareness about the clinical trials should be created, so that again the advocates should be able to apply pressure on government and the policymakers, so that a lot of issues which we have discussed today can be addressed. And without creating awareness through the media, now the social media is very powerful, and all of us should work towards it. And only by creating awareness in the social media and the print media and all the visual media, we cannot reach the people. That is my opinion. Thank you, Dr. Warrier. Dr. Kumar, if the audio is on, can we get your views to close this conversation? So, what I was saying that there are many challenges which we heard from people, and also the solutions. And starting from early diagnosis to investigations to treatment, to have a follow-up, so, and lung cancer, considering that majority of them are in advanced stage disease, so we do have a lot of challenges. Let's say, and we have seen that if you work in society, apart from government support, one can find solutions for the patients if we work together. So absolutely, that is all from my side, and I know that right. here everyone sitting, I know that they have worked in this area to give solution, and which tells us that it is possible. Absolutely. It's good to close on a positive note. I also would like to mention about the lung cancer support group in India. We go by, I'm closely associated with it, and we go by the name Lung Connect. Or ye group is a cohesive group of पेशेंट्स, पेशेंट एडवोकेट्स, केयर गिवर्स, डॉक्टर्स, जो सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि हम लंग कैंसर में पेशेंट्स और केयर गिवर्स को इंडिया में अकेला महसूस ना होने दें. So thank you to each of the panelists for being here and being a part of the discussion. There have been a lot of takeaways, but we are short on time. Maybe AstraZeneca and VOH will get us back again someday. But thank you, and it's been a pleasure moderating this session. Thank you very much.